बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनज़्ज़ा गफ़ूर आपको जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम किड्स मैथमेटिक्स बुक 5 के यूनिट 5 डिस्टेंस एंड टाइम के बारे में डिस्कशन करेंगे। डियर टीचर्स, आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है कन्वर्जन ऑफ डिस्टेंस इनटू डिफरेंट मेजरिंग यूनिट्स, और उसके अलावा शामिल है टू फाइंड आउट द लेंथ और द डिस्टेंस थ्रू सब्ट्रैक्शन और एडिशन मेथड। सो चलिए चलते हैं अब सबक की जानिब। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कन्वर्जन ऑफ मीटर्स टू किलोमीटर्स। अब हम देखेंगे कि अगर मीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। दैट मीन्स फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर, दैट मीन्स वी विल डिवाइड। Example 1, the distance from my house to school is 3000 meter. Let's find the distance in kilometers. That means smaller unit से bigger unit की तरफ हमने जाना है. So we know that 1 meter is equals to 1 by 1000 kilometers. To find the distance in kilometers, we will divide 3000 by 1000. So the answer, as you can see in the box, is 3 kilometer after the division. Now teachers, let's move on to another conversion of meters to centimeters. Now let's see one example. The height of a tower is 324 meters. What will be its height in centimeters? So again 1 meter में 100 cm होते हैं. And in this question, what we are doing, we are moving from big to small units, so we will multiply. So to find its height in centimeters, we will multiply 324 meter by 100, and after multiplication, as you can see, the final answer is the height of tower is 32,400 cm. डियर लर्नर्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ। शुक्रिया।